इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक रिकॉल करते हैं हम रिलेटेड एंगल्स जो कि प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो रिलेटेड एंगल्स हमारे पास क्या थे? तो ईच एंगल बिटवीन 0 and 90 degree called basic angle. There is an angle in each of four quadrant of Cartesian plane called related angles. For example, जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल, सपोज 30 डिग्री हमारे पास अगर एक एंगल है, सो दिस 30 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. Corresponding to this 30 degree, there is an angle in each of four quadrants. Like in second quadrant हमारे पास जो एंगल होगा वो 30 degree with negative x-axis. In third quadrant again angle, basic angle is with negative x-axis which is 30 degree, or in fourth quadrant this is like this one. So this angle 30 degree is called basic angle because it's between 0 and 90 degree. Now जो angle of this ray with positive x-axis which is this one is of measure 180 minus 30 degree means 150 degree. Similarly ये जो angle in third quadrant, this angle will be 180 plus 30 means 210 degree. और जो fourth quadrant में angle है, that will be, this angle will be 360 minus 30 means 330 degree. So these angles 150, 210 and 330 degree are called related angles. अच्छा in order to solve trigonometric equations, पहली चीज जो हमने माइंड में रखनी है वो हमारे पास ये डायग्राम है related to this Cartesian plane A S T C. Well, we have three different functions, trig functions at this level: sin x, cos x and tangent x. याद रखना है हमने कि in first quadrant all these functions are positive. In second quadrant sin is positive, means other two functions cos and tangent will be negative. In third quadrant tangent is positive, मतलब जो बाकी दो functions हैं cos and sin, they will be negative in third quadrant. Fourth quadrant में हमारे पास cos will be positive, so remaining two functions sine and tangent will be negative. Now, in order to solve a trig equation, like for example, suppose given equation is solved, sin x is equal to 1/2. Mostly हमारे पास interval mention होता है, suppose interval is between 0 and 360 degree. अच्छा, keep in mind that जितने भी trig functions हैं, they are positive in two quadrants and negative in two quadrants. Like sine is positive in first and second quadrants, whereas negative in third and fourth quadrant. Same is for cos. Cos is positive in first and fourth, negative in second and third. Tangent is positive in first and third and negative in second and fourth. ये point हमने याद रखना है. Now to solve an equation of this form like sin x equals to 1/2, याद रखना है first we will find basic angle. तो बेसिक एंगल के लिए सिंपल हमने क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेट कर लेना है. अब साइन इनवर्स 1/2 यूजिंग कैलकुलेटर, फर्दर हमने इस चीज़ की केयर करनी है, इफ द गिवन इंटरवल इज इन डिग्रीज तो हमने कैलकुलेटर मोड डिग्रीज में सेट करना है, एंड इफ द गिवन इंटरवल इज इन रेडियंस तो पहले हमने कैलकुलेटर को रेडियंस में चेंज करना है. इन दिस केस इंटरवल इज इन डिग्रीज, सो सिंपली टेक साइन इनवर्स 1/2 in degrees, right? So sine inverse 1/2 is 30 degree. So this is basic angle. क्योंकि बेसिक एंगल हमेशा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री होता है और साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन 0 एंड 90 डिग्री के दरमियान, तो ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू फॉर बेसिक एंगल. मींस इफ द इक्वेशन इज नेगेटिव 1/2 तो नेगेटिव ड्रॉप करके साइन इनवर्स 1/2 लेते, दैट विल गिव यू बेसिक एंगल. नाउ बेसिक एंगल की कैलकुलेशन के बाद आपने देखना है कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इन दिस केस साइन एक्स आपके पास पॉजिटिव है. आपने क्या करना है, डायग्राम पे वो क्वाड्रेंट्स मार्क कर लेने वेयर साइन इज पॉजिटिव, ए एस टी सी. फ्रॉम दिस डायग्राम साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. So we are looking for solution of this equation in first and second quadrant. So by this previous concept, sine is positive in first, solution in first quadrant is simply basic angle, means 30 degree, whereas in second quadrant solution is 180 minus 30 degree, so solution will be 150. So two solutions of given equation are
30 degree and 150 degree. These are solutions. अच्छा वेल सो सिंपल हम अपने इस डायग्राम को अपडेट कर सकते हैं. इफ द सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन किस क्वाड्रेंट में लाया करते हैं? डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ गिवन ट्रिक फंक्शन. इफ इट्स पॉजिटिव तो अकॉर्डिंगली हमने देखना है, इफ इट्स नेगेटिव तो अकॉर्डिंगली देखना है. अब याद रखना है कि इफ सॉल्यूशन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इट्स सिंपली इज इक्वल टू बेसिक एंगल. In second quadrant, solution is 180 minus basic angle. And in third quadrant, solution is 180 plus basic angle. If interval is from 0 to 360, इस चीज़ को भी mind में रखना है. And in fourth quadrant, solution is 360 degree minus basic angle. So these are solutions for angles between 0 and 360 degree. Okay, well, now suppose if the given interval is from, let's say, minus 180 to 180 degree. From minus 180 to 1 degree अगर हमारे पास given interval होगा तो in this case keep in mind that जो आपके solutions होंगे, in first quadrant solution is simple basic angle, in second quadrant is again 180 minus basic angle, in third quadrant is 180 plus in third quadrant, if the given interval is minus 180 to 180, then solution in third quadrant will be x equals to minus 180 degree plus basic angle. And in fourth quadrant, it's simply negative of basic angle. So these are solutions for interval between minus 180 and 180 degree. Okay, well. So if the given interval is in radians, say from minus pi to pi, unit conversion previously हम discuss कर चुके हैं, तो keep in mind the solution in first quadrant आपका same रहेगा. In second quadrant solution will be pi minus basic angle. In third quadrant it will be minus pi plus basic angle. Basic angle will be radians in this case. And in fourth quadrant solution will be same, which is negative of basic angle. ओके वेल एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दीज सॉल्यूशंस. सपोज द गिवन इक्वेशन इज sin of x is equal to negative square root 3 divided by 2 with values of x between minus pi and pi. Okay, so we need to solve this trig equation in the given interval which is between minus pi and pi. So the first thing is to find basic angle. Basic angle simple हमने पढ़ा था. Take sine inverse of positive value, drop the negative sign. Sine inverse square root 3 over 2 is care करनी है. Given interval is in radians, so calculator आपका radians में होना चाहिए. In radians sine inverse square root 3 over 2 is pi divided by 3. So this is basic angle. Now diagram draw करें ASTC. तो देखें साइन जो आपका इस केस में साइन ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव. क्वाड्रेंट मार्क करें. साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट. इंटरवल इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई. केयर कर रही है इन चीज़ों की. सो वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई. So well, when interval is between minus pi to pi, solution in third quadrant and fourth quadrant are respectively. So solutions are, one solution is in third quadrant, it's negative pi plus basic angle means pi over 3, and in fourth quadrant solution is simply negative of basic angle. So the solutions are minus pi plus pi over 3 is negative 2 pi over 3, and the next solution, other solution, is negative pi over 3. So these are solutions in the given interval for given equation. कुछ मज़ीद अच्छा वेल कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो हम इस डिस्कशन से कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स. First thing, to solve equations sin x equal to k or cos x equals to k where k is between minus 1 and 1, because हमने पढ़ा था कि जो range of sin and cos है it's between minus 1 and 1, so k can take values between minus 1 and 1. इस इंटरवल में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड बेसिक एंगल. किस तरह फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग कैलकुलेटर साइन इनवर्स के कैलकुलेट करेंगे. साइन इनवर्स के इज बेसिक एंगल. ओके वेल, फिर हमने याद रखना है, रिमेंबर दैट साइन एंड कोसाइन हैव
two solutions in this interval from 0 to 360 degree. Using CAST diagram और ASTC diagram जो कि साइंस के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि whether the given trig function is positive or negative in the given quadrant or not, ये चीज़ देखने के लिए वो हमने यूज़ करनी है. Identify the correct quadrants. Now, those solutions हम find कर सकते हैं by looking at quadrants in which sign is positive or negative. If the given interval is beyond 0 to 360, like 0 to 720 or minus 360 to 360, तो हम क्या करेंगे? We will add or subtract 360 in these solutions जो हम previous step में find कर चुके होंगे to find further solutions of given equation. Quick sketch, अगर हम sketch कर लेंगे trig functions को like sine and cosine को, will help us to look at number of solutions for the given equation. मतलब in that case आप कोई भी solution drop नहीं करेंगे. To make sure that you find all solutions correctly, आपने क्या करना है? एक quick sketch draw कर लेना है for sine and cosine. Not necessary, हम intervals की care करके भी ये चीज़ overcome कर सकते हैं. So few examples on trig equations. The first example is solve this equation between 0 and 2 pi. अच्छा well, याद रखें कि in order to solve a trig equation, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम किसी एक trig function की वैल्यू लिखेंगे. That function can be sin x, cos x और tangent x जो हम previously देख चुके हैं. So इस केस में अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो हमारे पास sin और cos दोनों इन्वॉल्व हैं. तो इट मीन्स हम डायरेक्ट इसे साइन या कॉज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. Both important type of questions in here where both sin x and cos x are involved with the linear powers with power 1. In cases में हम क्या करते हैं? We first find value of tangent x. हमें पता है कि tangent x is simply sin x over cos x जो कि first trigonometric identity है हमारी previous video में जो हमने डिस्कस की थी. So divide left hand side by cos x, sin x over cos x equals to 1/3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर लें, it's 1/√3. So it means tangent x is equal to 1/√3. Now we have value of a single trig function which is tangent x और जो हमारे पास वैल्यू है वो है tangent x equals to 1/√3. अच्छा well, तो remember first step में we will rearrange the given equation and find value of any one of trig function. It can be sin x, cos x or tangent x. अब जो second step है is to find basic angle. Basic angle calculate करें तो basic angle हमने पढ़ा था simple. आपने क्या करना है? Inverse function apply कर लेना है. तो tangent inverse 1/√3 calculate करें. Interval is in radians तो make sure कि आपके calculators radians में हो. It's simply pi/3. Sorry, it's pi/6. Using calculator, tangent inverse 1/√3 is pi/6. Okay, well, now अब आपने quadrants mark करने हैं. Tangent हमारे पास positive है in given equation. तो देखें tangent is positive, ASTC diagram draw करें. Tangent is positive in first and third quadrant. Given interval is from 0 to 2 pi. तो जो solution in first quadrant होगा वो हमने previously देखा, it's simply basic angle means pi/6. Whereas solution in third quadrant is pi plus basic angle means pi/6. So solutions are pi/6 and 7 pi/6. So these are required solutions in interval 0 to 2 pi. अच्छा well, another example. Well, इस केस में अगर हम देखें तो again दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वन इज कॉस एंड वन इज साइन, लेकिन कॉस पे स्क्वायर है इन दिस केस. तो हम क्या करेंगे? अगेन वी विल यूज ट्रिग आइडेंटिटीज टू राइट गिवन इक्वेशन, टू रीअरेंज गिवन इक्वेशन, टू एक्सप्रेस गिवन इक्वेशन इन अ सिंगल ट्रिग फंक्शन. तो जो हमारे पास ट्रिग आइडेंटिटी थी जो हम यहाँ यूज करेंगे वो थी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. दिस इज सेकेंड ट्रिग आइडेंटिटी गिवन इन फार्मूला शीट. फार्मूला शीट से देखें और देखो वी हैव अ लीनियर पावर ऑफ साइन. वी कैन नॉट चेंज साइन एक्स इनटू कॉस एक्स बट कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें और गिवन इक्वेशन में पुट कर दें. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन 2 times 1 minus sine square x equals to 1 minus sine of x. So well, this equation becomes 2 minus 2 sine square x equals to 1 minus sine x. Now rearrange to make it a quadratic.
2 sine square x, राइट पे मूव कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को, सो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 minus sine x and a negative 2 equals to 0. So we have a quadratic in sine 2 sine square x minus sine x minus 1 equals to 0. This is quadratic in sine x. Direct quadratic formula apply करें. Again, formula is given in formula sheet. Sine x equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Value substitute करते हैं. b is coefficient of sine x because given equation is quadratic in sine x. It's negative 1. So negative negative 1 plus minus square root negative 1 square minus 4 times a is 2 multiply c is negative 1 divided by 2a. a is 2 in this case. Sine square x का coefficient हमारे पास a. So this is 1 plus minus square root 1 plus 8 divided by 4, which is equals to 1 plus minus 3 root of 9, which is 3 divided by 4. Okay, well, so solving these equations, we can use calculators to get values of sine x. One value of sine x is sine x equals to 1 plus 3 over 4, and the other value is 1 minus 3 over 4. So two values for sine x are, one is sine x is equal to sine x is equal to 1, and the other one is sine x is equal to minus 1 over 2. Now we will solve these equations one by one. For sine x is equal to 1. Well, for solutions of sine x equals to minus 1, 0 or 1, we use its sketch. हम ग्राफ से calculate करेंगे these solutions because for zeros, for minimum and for maximum values of trig functions like sine and cos x, हम इनके ग्राफ यूज करते हैं. तो अगर हम रिकॉल करें स्केच ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ था. 0 पे 0, देन मैक्सिमम एट 90, 0 एट 180, minimum at 270, and then 0 at 360 for sine x. Sin x equals to 1 means we are looking for maximum value of sin x in interval 0 to 360. तो सिर्फ एक एंगल पे sin अपनी maximum value को take कर रहा है, which is 90 degree. So solution for first equation is 90 degree. Because these are quadrantal angles, these angles are on axis, so we cannot use calculator and ASTC diagram to get these values. जब हमारे पास sin x 1 minus 1 या 0 के इक्वल हो, या cos x minus 1 0 या 1 के इक्वल हो, we will use their graph to find their solutions. Well, in second case, sin x equals to minus 1 over 2. First calculate basic angle, which is sin inverse 1 over 2. Sin inverse 1 over 2 calculator use करेंगे, but remember that the given interval is in degrees, so calculator must be in degrees. Sin inverse 1 over 2 is 30 degree. So now look at ASTC diagram. We are looking for values of x where sin x is negative. Negative की care करनी है. Sin is negative in third and fourth quadrant. Solution in third quadrant is 180 plus 30 degree. Previously हमने define किया. Whereas in fourth quadrant it's 360 minus 30 degree. So solutions are 210 degree and 330 degree. So the final answer for this question is, in the given interval 0 to 360, x can take values 90, 210 and 330 degree. So these are required solutions. Well, another example. In this case, जो angle है हमारे पास, it's not simply x but it's 2x minus 60, और जो given interval है is still for values of x. So in these type of questions, be careful. पहले हमने क्या करना है? First we will convert this interval into 2x minus 60. Just like range of linear functions जैसे हमने किया था. So first find value of 2x minus 60, ताकि हमें idea हो कि जो values of given trig function है या for values of this angle हैं जो satisfy करती हैं given equation को, वो किस quadrant में possible हैं. So first we will change this given range of values of x for 2x minus 60. So for that, multiply each side by 2. So 2x is greater than or equal to 0, less than or equal to 360. Now subtract 60 from
each side, it's negative 60 is less than or equal to 2x negative 60 is less than or equal to 300 degree. So we need solution of this equation, means values of 2x minus 60 in interval between minus 60 and 300. नाउ जो हमारा मेथड था बेसिक वो सेम रहेगा. मेथड क्या था हमारे पास? वी हैव इक्वेशन साइन स्क्वायर 2x minus 60 is equal to 0.6. So first we will find value of sine. For that take square root on both sides. जब भी square root लेंगे तो don't forget to add plus minus sign to introduce plus minus sign, because sine can take positive and negative values. So plus minus 0.7745 square root of 0.6 using calculator to force significant figure. Now again we have two cases. The first case is sine 2x minus 60 is equal to 0.7745, and the second case is sine 2x minus 60 is equal to minus 0.7745. Okay, well, now for basic angle, we will take sine inverse of this value. Basic angle is sine inverse 0.7745, which is equals to, so जो basic angle है हमारे पास, that is 50.8 degree. क्योंकि दोनों केसेस में we have same number numerical values, sine जो positive negative है doesn't affect basic angle. So basic angle for second case is 50.8 degree. Okay, well, so now to write all solutions in this interval minus 60 to 360, हम क्या करेंगे? We will use ASTC diagram. अच्छा, well, so sine is positive के लिए हम solve कर रहे हैं, तो sine is positive in first and second quadrant. तो जो solutions in first and second quadrant होंगे, they will be 2x minus 60 केयर करनी है. We are finding solution for this equation. तो x की वैल्यू नहीं स्टेट करनी डायरेक्ट. We will write values for 2x minus 60 degree. First quadrant में जो हमारे पास solution है simply basic angle, और in second quadrant जो solution है that will be 180 minus basic angle. 180 minus 50.8 degree. So for positive value of sine, 2x minus 60 is equal to 50.8, and 180 minus 50.8 is 129.2. 129.2 degree. Okay, well, so ये हमारे पास values आ गई हैं दो for positive values. Whereas for negative part, basic angle same है, but if we look at ASTC diagram, sine is negative in third and fourth quadrant. Now remember that interval for 2x minus 60 is between minus 60 and 300. So for solution for this part, for 0 to minus 0 to 300 degree, हमारे पास इस तरह की curve बन रही है, और for negative 60 we are moving basically or rotating the given arc in clockwise direction. So solution in third quadrant, because sine is negative, 2x minus 60 is equal to, further care करनी है कि बेटे write values for 2x minus 60 and not for x. Okay, well, so 2x minus 60 degree is equal to, in third quadrant is 180 plus 50.8, whereas in fourth quadrant it's 360 minus 50.8. Since we have another possibility, this curve can rotate in clockwise direction as well, so we need to add another value in fourth quadrant. Yeah, we can later on subtract 360 from these values. Okay, well, so these are values of 2x minus 60 for negative part. Achha, well, if we simplify them, then 2x minus 60 is equal to 180 plus 50.8 is 230.8 degree, and 360 minus 50.8 is 309.2 degree. So these are values, right? Achha, well, since the interval is from minus 60 to 360, so we need to check
the other values as well. Because the interval is beyond 0 degree, so we will subtract 360 to make sure that हम कोई value कोई solution miss ना करें. If we subtract 360 from this value, we get an answer of 130, which is not in the given interval, in this interval, so drop this value. If we subtract 360 from this part, then the answer is within the range, which is, if we subtract 360, which is minus 50.8. So we have two possibilities for this part, 230.8 degree, and the next one is minus 50.8 degree. Now make x subject of all these expressions. For this equation, x equals to, क्या करेंगे, 50.8 plus 60 divided by 2. 50.8 plus 60 divided by 2, which is 55.4. So the one possible value is 55.4. 129.2 plus 60 divided by 2, which is 140. 129 plus 60 is 189, divided by 2 is 94.6. So in other values, use your calculators efficiently. Acha, well, for this part, x equals to 230.8 plus 60, which is 290, divided by 2, so it's 145.4. And for this last part, minus 50.8 plus 60 divided by 2, which give us a value of 4.6 degree. So the final answer is 4.6 degree. Second value is 55.4 degree. Next one is 94.6 degree, and the next one is 145.4 degree. So these are solutions for given equation.